Okay, guys, let's assume. Now, this is an extremely important concept. ये paper 3 में भी बार-बार आ रहा होगा. So make sure that you understand it well. Solving equations that have something other than x or theta as the angle. So we have seen equations like these. हमने देखा इसमें equation को कैसे solve करते हैं. For instance, if we have cos of theta equal to 0.8, for instance, we know how to solve such equations. इसमें जो भी interval दिया हो, we can solve such equations, right? But what if instead of this, instead of theta, we've got something else? Theta की जगह कुछ और आ जाए. Gamma, उससे नहीं फर्क पड़ता कि gamma आने से. But सिर्फ letter change होने से फर्क नहीं पड़ता. मतलब एक single angle की बजाय कुछ और आ जाए. For instance, आपके पास आ जाए cos of theta plus 60 equals 0.8. Now, what do we do with something like this? We देखेंगे, सबर करेंगे, सबर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे. Wait, हौसला. Or in fact, if we do it this way, 0.8 way, we get that. Okay, let's keep it this way for now. Cos of theta plus 60 equals 0.8, and we're given an interval for theta that is from 0 to 360. अब देखें इस केस के अंदर जो आपका एंगल है ना, you have a question? इस केस में जो आपका एंगल है वो एंगल क्या होएगा? एंगल ये पूरी चीज है. एंगल इज नॉट जस्ट थीटा. एंगल इज दिस होल थिंग. इज दैट ओके? एंगल इज थीटा प्लस 60. अब इस तरह के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व किया करेंगे? व्हाट वी डू इज वी यूज अ सब्स्टिट्यूशन हियर. तो हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं. हम कहते हैं कि अच्छा, लेट्स कॉल दिस थिंग whatever is the angle, जो पूरा का पूरा एंगल है, आपने क्या करना है, उस पूरे एंगल को किसी और लेटर से डिनोट कर देना. Let's say we have a equal to theta plus 60. तो उस पूरी की पूरी इक्वेशन को आपने किसी और वेरिएबल के टर्म में कर लेना है, जो पूरा एंगल होएगा उसको किसी और लेटर से डिनोट कर देना. Is that okay? Now that equation becomes cos of a equal to 0.8. Wait, अभी नहीं. अभी wait. Cos of a is equal to 0.8. All right. आपने पूरे एंगल को क्या किया? एक और वेरिएबल से डिनोट कर दिया. And now you solve this equation instead. Instead of solving that original equation, you solve this equation that has a in it. लेकिन जो आपको इंटरवल दिया हुआ था, इंटरवल तो आपके पास थीटा के लिए था. तो आप क्या करोगे? उस इंटरवल को भी एडजस्ट करोगे और उसमें a का इंटरवल निकालोगे. So this is going to convert to a between what? आप ये थीटा की वैल्यू जो लोअर लिमिट है क्या है? 0. You input 0 in this. 0 input करते हैं, आपको क्या मिलता है? 0 plus 60, that is 60. So the lower limit that we have for a is 60 degrees. 360 जाके इसमें input करें थीटा की जगह पे. 360 plus 60, that gives you 420. So when you're solving this equation now, keep in mind that your interval is going to be from 60 to 420. Now forget about everything that we've done before. Now just solve this equation. Let me repeat. आपने क्या किया है? आपके पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन में जो भी एंगल था, उस पूरे को आपने किसी और लेटर से डिनोट कर दिया. एंगल को किसी और लेटर से डिनोट कर दिया. So we said let a equal theta plus 60. Now once we have done that, we also adjust the range that's given, the interval that is given. उसको भी adjust करना पड़ेगा. उसको adjust करेंगे तो क्या होएगा? हमें मिला कि a should be between 60 and 420. आपने 0 input किया उसके अंदर, उससे 60 मिला. एक दफा 360 input किया, 360 corresponding to a की value आती है. What's that? That's 420. And now what you do is you solve this equation. ये equation solve कर ले. Now how do you solve this equation? We find the basic angle first of all. We say cos of alpha equals 0.8 and find the value of alpha from this. Alpha की value क्या आती है?
36.9 degrees या 87 degrees. This is what you have. This is the basic angle. Is that okay? Now what you do is you think of quadrants. Quadrants बना ले. Cos is positive. That's the first quadrant or the fourth quadrant. You could either be here. This angle is 36.9 degrees, or here this is also 36.9 degrees. Now the interval only has positive values, so negative side पे तो नहीं जाना, सिर्फ positive side पे जाना. Now let's go here. This is the first value that we get. A equals 36.9. Is that possible? That's not in the interval. ये नहीं consider कर सकते आप. Okay? ये नहीं consider कर सकते. Even though theta का interval ये था, but हम theta की तो equation नहीं solve करें. हम तो A की equation solve करें. A के interval में ये नहीं आता. आपने इसको नहीं include करना. This is not possible. So what we do is we go to the fourth quadrant directly. First of all, that is 360 minus 36.9. That gives us 323.1 degrees. Now, is that the only angle that we have? We could also go one full circle and then come back to this. This angle is also in the interval. This is also in the interval now. ये 420 के अंदर आ रहा है. A equals 360 plus 36.9. What does that give you? 396.9 degrees. This is another value of it. Now you put that substitution back जो आपने पहले use की थी. आपने A की value से नहीं निकाली थी. A तो आपने खुद से variable assume किया है. What was A? A was theta plus 60. वो आपने assumption ली थी पहले. अब उसको वापस यहाँ पे इनपुट कर दें. उसे theta plus 60 equals 323.1 or theta plus 60 that equals 396.9 degrees. The value of theta that you get from the first one is 263.1 degrees, and from the second case you get 336.9 degrees. These are the values of theta that you get from this. Now you see the values of theta that you get at the end, they are going to fall in that interval जो उसने दिया हुआ था. ये 0 से 360 के दरमियान में खुद से ही आ जाएंगे. Okay, जो आप interval सही तरह से adjust करोगे पहले, you will get those values of theta at the end. They will fall in that interval. And these are the two solutions that you have for this. Is that okay? Now let me know if you have any questions on this. Yes, sir. Substitution के बगैर भी कर सकते हैं. Substitution के बगैर भी ये कर सकते हैं, but it becomes slightly more complicated in some situations. So I would recommend that you use this substitution. I used to do without substitution earlier, but a lot of in the exams, I found most people doing it incorrect that way because वो confused हो जाते हैं किसी point पे जाके. अगर आप ये substitution use करते हैं, it makes things a bit easier. आप इसमें mistakes के chances थोड़े कम हो जाते हैं. So I would recommend that you use a substitution. यहाँ पे directly करना इतना मुश्किल नहीं था, but कभी-कभी जो अंदर वाला part है ना, ये काफी complicated आ जाता है. फिर उसमें substitution use करने से आपकी थोड़ी सी आसान हो जाती है. Okay, so I would recommend that you do it this way. Okay, substitution सही करें. इसमें हो सकता है आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन कुछ cases में चीजें complicate हो जाती हैं for most people. If you're comfortable doing it without substitution and you can be sure you will not be doing careless errors, that's okay. तो वो तो जब substitution use कर रहे हैं वो तो करना ही है ना in any case. तो वो तो सब कुछ handle हो जाता है. Directly कर लें. If you're comfortable doing it that way, that's okay. उसमें कोई मसला नहीं है. Okay, चलें. Let me just tell you about this quickly. How much time do we have? 15 minutes. Okay. आप directly इस तरह से कर सकते थे. Cos theta plus 60 that equals 0.8. This was the equation. अगर हमने directly करना होता, interval इसने क्या दिया हुआ है? 0 से लेकर 360 तक. अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस interval को adjust करेंगे. आपको theta का interval दिया हुआ है. The angle is this whole thing. The interval for theta plus 60 वो क्या होगा? पूरी inequality में 60 add कर दे. 0 plus 60 is 60. 360 plus 60 is
420। आपने इंटरवल एडजस्ट कर लिया। अब ये जो भी एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पूरे को आप अल्फा में कन्वर्ट कर दो एंड फाइंड द बेसिक एंगल। cos अल्फा इक्वल 0.8। बेसिक एंगल आपके पास आ जाएगा, दैट टर्न्ड आउट टू बी 36.9। फिर से आप कोऑर्डिनेट्स देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट और द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज द बेसिक एंगल, दिस इज द बेसिक एंगल। कौन से क्वाड्रेंट्स में हो सकते हैं, फर्स्ट या fourth? Now again, the angle in the first quadrant, it does not fall in this interval. Remember, this is the interval that you're going to be looking at. 60 to 420. इसमें पहला वाला एंगल नहीं आता, फोर्थ वाला आता है। So you say theta plus 60 equals 360 minus 36.9, or theta plus 60 equals 360 plus 36.9. In this case, you get the value of one value of theta from here, which is going to be 300 and what? Two 63.1, 263.1, not 3, 260, 3.1 degrees, and the other one was 336.9 degrees. You get the same two answers, and the working is shorter, but this was a very simple case, simple scenario. इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ना इस रेंज में कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं फिर, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड दैट यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहे होंगे all the questions that we do. Now, how many of you preferred using the way that we did earlier? And how many of you would prefer doing it the second way? Okay, all right. I'm sorry, don't have much support. मसला पता है क्या होता है, जनरली फॉर ऑल, मुझे भी पहले मैं यही करता था, राइट? दिस इज क्विकर, इट टेक्स लेस टाइम, बट इट एंड्स अप बीइंग डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल फॉर सम रीजन। और ये भी होता है जिन लोगों ने एडमिट्स में किया होता है ना, उन लोगों को ये वाला मेथड क्यों आसान लग रहा होता है, बिकॉज दैट इज द वे दे हैव लर्नड इट द फर्स्ट टाइम। और जो चीज आप पहली दफा करते हैं ना, वो आपको आसान लग रही होती है। जैसे हम पोलिनोमियल्स में हम लॉन्ग डिवीजन जनरली पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सिंथेटिक करते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल फाइंड कि सिंथेटिक डिवीजन तो समझ नहीं आ रही है क्या चीज है, इवन दो दैट्स मच क्विकर एंड मच सिंपलर। लॉन्ग डिवीजन आसान लगती है बिकॉज हम पहले करते हैं। सो दैट्स जस्ट सबकॉन्शियस एज वेल फॉर दैट रीजन, बट वी जस्ट विल बी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं आप कर लें, you're allowed to do that, आप कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, that's okay। ये क्लियर है सबको, कोई मसला है इसका? जी जी बताएं। डायरेक्टली कैसे नहीं कर सकता? डायरेक्टली क्या करें? अच्छा, okay, I get what you mean. So you're saying cos theta plus 60 को आप लिख दें cos theta plus cos 60। देखें, cos is not a number जो इन पे मल्टीप्लाई हो जाए, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। cos is something that is applying on this whole angle. You are telling me कि cos of 30 plus 60 जो होता है, that is the same thing as cos 30 plus cos of 60, which is wrong. cos उस पे अप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा जो आप इसको ब्रैकेट को एक्सपैंड कर देंगे इस तरह से। इसको एक्सपैंड करने के लिए वी हैव एन आइडेंटिटी जो हम पेपर 3 में करेंगे बाद में। वी कांट डू इट लाइक दिस, ओके? अच्छा, नाउ let's do a relatively more complicated example on this. ये सबको समझ आ गया प्रोसेस? इसमें क्या मसला है? ये प्रोसेस सबको समझ आ गया? Let's do an example in radians, and that's going to be slightly more complicated. There's a question in the worksheet. I'm going to skip the first part of this, so आप बाद में कर सकते हैं. Yeah, I'll give you a hint for that actually. Second part हम करते हैं. जो लोग uneasy हो रहे हैं काफी, this is the last question that we're doing. We'll end after this.
तो प्लीज दरमियान में बैग्स बंद करना नहीं शुरू कर देना। लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। यूनस बातें नहीं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 44 फ्रॉम द वर्कशीट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x square minus 1 that equals pi over 3. That's the first part. All right. How do you solve this equation? Sin inverse of x square minus 1 equals pi over 3. क्या आप ये चीज evaluate कर सकते हैं कैलकुलेटर से? यहाँ पे तो x आ गया है, तो क्या करें? साइन को दूसरी साइड पे लेते हैं, राइट? साइन को आप वहां पे ले जाएं उस साइड के ऊपर, तो साइन जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट यूनस? जब साइन इनवर्स दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होएगा? वो साइन बन जाएगा और पाई ओवर 3 पे अप्लाई हो जाएगा, राइट? अभी आप इवैल्यूएट कर लें साइन पाई ओवर 3 की वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2. X square minus 1 equals square root of 3 over 2. Now simplify this. This gives you 2x square minus 2 minus equal to square root of 3. आपको आंसर इनफैक्ट डेसिमल्स में चाहिए, आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर लें उसके अंदर, दैट्स आल्सो फाइन। एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, उसने रखा हुआ 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, 2 plus square root of 3 and then you have x square equals 2 plus square root of 3 over 2, and you take square root of this, that's plus minus square root of 2 plus square root of 3 over 2. इसको डेसिमल्स में लिखते हैं, देखें क्या आता है। 4 डेसिमल्स तो क्या आता है? बस 0 आता है, ओके। 0.366, उसने कहा 3 decimal places, you have to write 3 decimal places. This is your answer. X equals plus minus 1.366. We have 2 answers here. Make sense? ये क्लियर है? साइन को साइन इनवर्स को दूसरी साइड पे लेके गए, साइन बन गया, उसके बाद इट्स अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने सॉल्व कर ली। Make sense? Let's look at the second part. This is extremely important. अब वही चीज हमने ऊपर की थी वो रेडियंस में कर रहे हैं। We have this equation, sine of 2 theta plus pi over 3, that equals 1 over 2. Theta is between 0 and pi, and you have to give theta in terms of pi in the answers. जो answers आपके आएंगे वो pi के terms में लिखने हैं, decimals में नहीं convert करना, exact values चाहिए। ये equation अब आपने solve करनी है। Is this radians or degrees? Degrees का sign नहीं है, it's radian, okay? और pi के terms में आपको वैसे भी नजर आ रहा है, pi के terms में normally हम radians वाले angles जो लिख रहे होते हैं, degrees वाले नहीं लगता। How do we solve this equation? We start by using a substitution. We say, let's say this thing is another thing. This is a equal to 2 theta plus pi over 3. All right. Now, what about the interval for a? A का interval एक दफा 0 डाल दें उसके अंदर। एक दफा क्या करें, थीटा के वैल्यू इसके अंदर 0 डाल दें, उससे क्या मिलता है आपको? पाई ओवर 3। दैट ओके? एक दफा आप पाई डाल दें इसके अंदर, दैट्स 2 पाई plus pi over 3, which is going to be 7 pi over 3. This is your interval for a. Make sense? ये आपका a का इंटरवल आ गया। 0 इनपुट किया इसके अंदर, 2 into 0 plus pi over 3, that's pi over 3. दोनों वैल्यूज में से इनपुट किया ना इसके अंदर, 0 to pi लिखा हुआ ना यहाँ पे। लोअर लिमिट इनपुट की, एक दफा 0 इनपुट किया, एक दफा पाई इनपुट किया। ओके, अच्छा सब्स्टिट्यूशन यूज कर ली।
पाई इनपुट किया इसके अंदर, आप पहले बातें करें, अब्दुर्रहमान बताएंगे आपको कि क्या आएगा। ओके, पाई इनपुट करें इसके अंदर थीटा की जगह पे, दैट बिकम्स 2 पाई प्लस पाई ओवर 3, दैट्स 7 पाई ओवर 3। ओके, अब क्या करें, ये इक्वेशन क्या बन गई, साइन ऑफ a इक्वल्स 1 over 2। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड द इंटरवल इज फ्रॉम पाई ओवर 3 to 7 पाई ओवर 3। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। हाउ डू यू सॉल्व दिस इक्वेशन? बेसिक एंगल क्या होएगा, sin alpha equals 1 over 2, what's the value of alpha? Pi over 6, that's the basic angle. All right, now let's draw quadrants. Sine is positive, which quadrants could it be? First and second. You've got alpha here, this is pi over 6, wait, this could be pi over 6 and this could be pi over 6. These are the two basic angles. Now what is the interval? The interval does not have any negative values, so सिर्फ positive side पे देखना है आपने, negative side पे नहीं जाना. Now remember radians में, this is 0, this is pi over 2, this is pi, and you have 3 pi over 2, then you have 2 pi at the end, right? This is how it works. Now, what's the first angle? The first angle that you're getting here is pi over 6. Is that in the interval? Pi over 6 is smaller than pi over 3. अगर आप confuse हो रहे हैं, decimals में convert करके देखना है. Pi over 6 जो है, this is 0 something around 0.5. Pi over 3 जो है, ये 1 से ज़्यादा होएगा, ठीक है? 0.5 is less than 1. ये range में नहीं आ रहा आपका पहला वाला angle. Is that okay? So you do not consider that. What's next after that? ये वाला next angle बन रहा है. So you say A equals pi minus pi over 6, which is 5 pi over 6. अब फिर क्या होगा, अगर आप ये पूरा सर्कल घूम के वापस यहाँ पर आते हो, आपको क्या मिलता है उससे? 2 pi plus pi over 6, which is 13 pi over 6. Is that in the interval? This is in the interval. डेसिमल्स में कन्वर्ट करके देख लें अगर आसान, वरना रिमेंबर फ्रैक्शंस कैसे कंपेयर करते थे, इसको भी अगर आप 6 बेस में डालें, 14 pi over 6. Is 13 pi over 6 bigger or 14 pi over 6 bigger? So 13 pi over 6 does fall in the interval. Is that okay? पूरा सर्कल घूम के दोबारा pi over 6 पे आ गया ना, so that's 2 pi plus pi over 6. Please, हाँ. Is that okay? So this is in the interval. ये interval में आ रहा है आपके, तो अब क्या होएगा? 13 pi over 6 interval में आ रहा है. So what do we do here now? The other possibility for A is 2 pi plus pi over 6. That gives us the value of A equal to 13 pi over 6. But that's not your answer yet. आप find क्या कर रहे थे? आप find तो theta कर रहे थे. अब क्या करेंगे, वो वापस substitution input करेंगे. 2 theta plus pi over 3 equals 5 pi over 6, or 2 theta plus pi over 3 equals 13 pi over 6. जो substitution हमने यहाँ पे use की थी, वो अब substitution आपको वहां पे वापस input करनी है. All right. Now let's see what this gives us. Pi over 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, आपके पास आ जाएगा pi over 2. 5 pi over 6 minus 2 pi over 6, that's going to be pi over 2 at the end. Theta equals pi over 4, that's one value for theta. आप calculator से करें, that's okay. Calculator पे डालें values and we'll get the result. 2 theta equals 13 pi over 6 minus 2 pi over 6, which is going to be 11 pi over 6. And then theta is equal to 11 pi over 12. And that is your answer. These are the two values of theta that you've got. Make sense? Substitution use की, interval adjust किया, उस variable में solve कर लिया, end पे जाके आपने वो substitution वापस कर दी.